Dear student, in our last video lesson, we talked about direct and indirect speech basic introduction. And today we are talking about rules converting direct speech into indirect speech. There are different rules. Before learning the rules for conversion of direct speech into indirect speech, you must learn the following two components of a sentence of direct speech. इससे पहले कि हम रूल स्टार्ट करें कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर दो कंपोनेंट है डायरेक्ट स्पीच के। जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होता है इस सेंटेंस के दो कंपोनेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में दो चीज़ें होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस he said, she say, they say that etc. before the actual word of the speaker is called a reporting verb. इस सेंटेंस को देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है दोनों। ये हमारे पास इस तरह होता है, she said, she says, ये कामा से पहले जो आता है ये एक्चुअल वर्ड है, और ये जो पहले आता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ही सेज यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही सेज हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, और जब ये डबल इन्वर्टेड कामा में हमारे पास इनक्लोज्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। द सेकेंड सेंटेंस एक्चुअल वर्ड ऑफ अ स्पीकर दैट इज इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कामास और कोटेशन मार्क इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। शी सेड आई गॉट जॉब इन कॉलेज। So these are the two basic component of a direct speech sentences. You have to remember this, reporting verb and reported speech. अब हमारे पास जो बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे साथ बेसिक रूल्स आ जाते हैं। ये बेसिक रूल्स क्या है? रूल्स नंबर 1, वर्ड ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट इनक्लोज इन इन्वर्टेड कामास और कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर ना तो कामा लगेगा, ना हमारे पास इन्वर्टेड कामा लगेगा, और इसमें एडिशन दैट आ जाएगा। रूल नंबर 2, यूसेज ऑफ वर्ड दैट। द कंजंक्शन दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास क्या आ जाता है, हम ये कामा और इन्वर्टेड कामा ख़त्म करके इसके बजाय हम दैट लगा लेते हैं एंड, और फिर हमारे पास द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस आ जाती है। He said I write a letter, so he said that he wrote a letter. Okay, so these are the two basic rules. Now we shift it into third rule. Rule number third, change in tense of the reported speech. अब हम tense change करेंगे, change in tense of the reported speech. A change is made in tense of reported speech for changing a direct speech into indirect speech. हम if the reporting verb or the first sentence, हमारे पास चेंजेस होते हैं टेंसेस में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं। लेकिन ये चेंज हम तब करते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब आर फर्स्ट सेंटेंस अब डायरेक्ट स्पीच इज आइदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, नो चेंज विल बी मेड इन द रिपोर्टेड स्पीच फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखे, शी सेड आई एम वॉचिंग मूवी। इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पर हमने टेंस में चेंज की, फास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू फास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसलिए किए कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में था। जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमारे पास नो चेंज इन टेंस। ही सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, he says that he is playing cricket. We only change the pronoun, not the tense. Okay, you have to remember this point. जब हमारे पास reporting verb past tense में हो तब ही हम tense में change कर सकते हैं, और हमारे पास ये past tense में ना हो
प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसके टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे. No change will made in the reported speech for making only if the reporting verb or past sentence of a direct speech belong to the past tense. Change will be made in a tense reported speech for making indirect speech. फिर हम चेंज करेंगे. वो चेंज किस तरह होता है हमारे पास, वो हम रूल्स में बताएंगे कि किस टेंस को हम किस टेंस में चेंज करते हैं. लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए आपको कि जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब फास्ट में हो तब भी हम टेंस चेंज कर सकते हैं. नो वी हैव रूल नंबर 4, चेंज इन प्रोनाउन. अब प्रोनाउन में भी चेंज आ जाता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रोनाउन आर अ सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन subject or the object of the reported verb. First sentence of direct speech. The possessive pronoun his, her, my, their, your, etc. may also change according to the subject or subject of the first sentence. You have to remember when we change the direct speech into indirect speech, we change the pronoun according to the subject. Okay, or sometime according to the object. He said, I eat 2 apples. He said that he ate 2 apples. So here we can change, but according to the subject. She said to me, I like your book. She said to me that she liked my book. So we change it into according for rules. Now we have rule number 5. If there is टाइम मेंशन इन सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में टाइम मेंशन होता है. द टाइम विल बी चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. और ये टाइम हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं. उसके लिए कुछ खास वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं. देयर आर सर्टन रूल चेंजिंग द टाइम. नॉट इनटू नॉट, here it is not, it is not. Into then, tomorrow into the next day, today into that day, yesterday into the previous day, last night to the previous night. Example, she said I am buying a laptop today. Indirect speech, she said that she was buying a laptop that day. So you can see here also the pronoun change. Here is also omission of comma and inverted comma. Here is also tense change, and here is also time mention change. Direct speech, he said I need your no. He said that he needed, I need your help. Here is help is missing. He said that he needed my help then. Okay, so these are the 5 basic rules while changing the direct into indirect narration. Here are some other rules we will discuss in our next lesson. These how change, what change, tense change into other. So we will look it into our next lesson. So our lecture is end up with this point. Now I am giving you a home assignment. Write the whole slides in your neat notebook. Understand the lesson through video lesson. Understand and memorize the rules of direct and indirect narration. ये जो बेसिक रूल है आपने उसको याद करने हैं और इसको समझने हैं. So see you in the next class. Allah Hafiz.